SPF. The standard SCL, extended SCL, named SCL, numbered SCL. So understood this one, right? Any queries? Anyone having any questions on the SCL on and OSPF? Everyone got it? No one is having any questions, right? Raviraj, Abhimanyu? Yes, sir. Yes, sir. No Yes, sir. doubts. No, sir. All right. So today we are discussing about a couple of things. First of all, we are starting with NAT and DSCP. These are the two concepts we'll finish first, and after that, if time covers, we'll look into the device management, how to perform device management in a network. So starting with our NAT concept, as you can see that we have this topology from the routing section itself, but the topology is changed. Here we are having our LAN number 1. LAN number 1. LAN number 2, 3, and 4. These are right now divided. So LAN number 1 is having this IP address 192.168.100.0. This is from the private class C. And in LAN number 2, 3, and 4, we're using the class C IP only. But these are all coming from the public. Okay. Now, why we are using this topology like this? Why I have changed these addresses? That is to demonstrate this particular concept called NAT. So normally what happens in a private network, you are having your machines which is using private IP addresses. These private IPs are free of cost addresses and every single machine is using it. But the drawback of using private IP, or the disadvantage, that is these addresses are not allowed on internet. So if this private IP is what we are using on our machine is not allowed on internet, then how we are making communication on internet? That is a big question. So this concept called NAT is helping us in order to make that communication. Okay. So NAT basically stands for what? Network Address Translation. And we're using it to translate our private to public and public to private IP addresses. Means your machine, when it is communicating on internet using a private IP, then this private IP is getting translated into a public IP. For example, 192.168.100.2, it will be translated into this public IP. And with this IP, your packet is going towards internet. Okay, so suppose you were sending a request to this particular server on internet. Then the request packet, private IP, is translated in this public IP and it is sent. Now, when the reply is coming using the public IP. Okay. So when the reply is coming using the public IP, then it is again translated in private. And this is how this machine is getting the reply. Okay. So the thing here is, all these machines on internet, they don't have any idea about what private IP you are using. Because these addresses, private IPs are completely hidden from internet. That is your public network. But still you are making communication on internet. So this NAT basically is used for this purpose. That is, whenever we are using any private IP and we are communicating on internet,
Then our private IP, it is translated to public IP. And this is how the request is going towards internet. When the reply is coming, then the reply is coming using the public IP. Again, it is translated back to the private IP and it is delivered to that private network machine here. So who basically performs this NAT? That is what we call the NAT device. NAT device. Now, which device is the NAT device, or what type of device is the NAT device? That is your router, for example, it's a NAT device. Another device what we use that is called firewall. In this firewall device also we use NAT. So maximum time you will be configuring NAT on a router as well as in firewall. Okay. Like you can think of it like 60% you will configure in router, 40% you will configure in firewall. But these are the most popular devices what we are using for configuring NAT. So since in our topology we have these routers available, this is the router which is basically connecting to the private network as well as public network. So NAT should be configured on this device only. Okay. Why? Because you cannot configure NAT if the router is not connected to both the networks here. So you have public network on one side, you have private network on another side, and this is the router which is connecting the private to public. That is why this router should be selected to for NAT configuration. Okay. So this is the NAT router which is getting all the configurations for performing the translation of private to public, public to private IPs. So always in NAT we're having certain terms, this terminologies we have that is inside and outside. Now, inside always refers to the private network in NAT, whereas outside always refers to the public network. So for NAT, it is very much important that which network is inside, which network is outside. It has to know that. Means whenever you will be configuring NAT on your router, then this is when the router needs to know that which interface is connected to the inside network, which interface is connected to the outside network. For example, 0/0 is connected to private, 0/1 is connected to public. So this information always we need to give on the router. Okay. Then only NAT will be performed. So this local and global, what exactly it means? Local means the private IP, what your machine is using. Okay. For example, you can see that this is our local address, 192.168.100.2, and this is our global address. Global address means the public IP. Okay. The IP, what you are using on internet for translating your private IP, that is your inside global IP. Okay. So inside always refers to the source perspective, and outside always refers to the destination perspective. If we are doing that as source, then for us this is our destination. If they are also doing that, then whatever private IP they are using, that is called outside local, and whatever public IP they are going to be using to translate their private IPs, that is called outside local. Okay. So that is from source perspective. If the destination is also performing NAT, then their private IPs are called outside local, and whatever public IP they are using to translate their private IPs, that is called outside global. So this inside local, outside global, these are the terms what always we need to remember, that which particular NAT term represents what address. So that is your inside local, inside global, outside local, outside global. Inside always refers to the source, outside always refers to the destination. So we have these three types of NAT. Okay. And if you ask me that which one is the most popular one, then this is the third one, which is the most popular. That is called NAT overload or port address translation. Static NAT also is there, dynamic NAT is also there, but this one is the most popular one.
But most popular doesn't mean that other types of nets are not used in companies' network. Every single types of net are being used based on the requirement. When we have a requirement, then only we use this specific type of net based on that. So static net means what? Static net means manual. As you have already done static routing, you understood that how exactly is the Excuse static. me, sir. Tell me. Sir, can you repeat outside local and outside global? Outside It's local little is outside it's little local. confusing, sir. You are when you are explaining, sir, you continuously speaking. Uh, in between, you are not asking, are you have you understand or not? सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है सर आप कंटिन्यूअस बोलते जा रहे हैं हमें कुछ मतलब वो नहीं पल्ले नहीं पड़ रहा है कभी कभी चीजें आप बीच में बोल रुक भी नहीं रहे सर हाँ तो ठीक है तो फिर बताना है ना। अगर कोई दिक्कत है तो फिर बताओ उस टाइम पे ही बताओ जैसे अभी बताए हो राइट बताना पड़ेगा तो अगर बताओगे नहीं तो फिर कैसे होगा। इनसाइड का मतलब क्या है? सोर्स। आउटसाइड का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन। तुम्हारे सोर्स पे तुम्हारा जो प्राइवेट आईपी है उसको तुम क्या कहते हो? इनसाइड लोकल। डेस्टिनेशन पे अगर प्राइवेट आईपी है तो उसको क्या कहते हैं? आउटसाइड लोकल। आउटसाइड लोकल तो तुम्हारा ये जो प्राइवेट आईपी ये अगर ट्रांसलेट होता है इस एड्रेस से 50.1.1.1 दैट इज अ पब्लिक आईपी उसको क्या कहते हैं? आप इनसाइड ग्लोबल। ओके ये इनसाइड है तुम्हारा सोर्स मतलब इनसाइड। और अगर ये डेस्टिनेशन का प्राइवेट आईपी ट्रांसलेट होता है इस एड्रेस से 60.1.1.1 ये जाएगा आउटसाइड ग्लोबल। ओके तो ग्लोबल का मतलब क्या हुआ? पब्लिक आईपी। लोकल का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट आईपी। ओके तो अगर तुम्हारा नेटवर्क पे प्राइवेट नेटवर्क है अगर प्राइवेट नेटवर्क पे तुम प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हो तो तुम्हारा नेटवर्क के लिए वो होगा इनसाइड लोकल। ओके इनसाइड लोकल क्योंकि क्योंकि तुम तुम्हारा नेटवर्क पे कर रहे हो ना नेट सोर्स हो तुम। अगर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से मेरे नेटवर्क पे भी नेट चलता है तो तुम्हारे लिए मैं क्या हुआ? डेस्टिनेशन है कि नहीं? तुम सोर्स हो तो मैं क्या हुआ? डेस्टिनेशन हुआ। तो मेरे नेटवर्क पे अगर मेरा प्राइवेट आईपी कोई भी मशीन यूज करता है तो उस आईपी को क्या कहेंगे? आउटसाइड लोकल। और जो आईपी यूज करके मैं मेरा प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करूंगा डेस्टिनेशन के पर्सपेक्टिव से उसको क्या क्या कहोगे? आउटसाइड लोकल। आउटसाइड बस यही है। ओके ठीक है तो स्टार्टिंग में डायनामिक नेट नेट ओवरलोड और cut तीन टाइप्स you are having. Static net means what? Manual net. Manual net means you will have to configure it. Okay. So manually, when you are configuring all these private public IPs, always it is taking time. Okay. It is always taking time. If you are having 100 private IPs, then you need to translate manually all those 100 private IPs into public IPs. So when the network is small, you can go for static net. When the network is big, you go for dynamic net. So in dynamic net, what happens? We use SEL. We use SEL to match our private IPs. Okay. तो जो भी तुम्हारे प्राइवेट आईपीस हैं उन सारे प्राइवेट आईपीस को मैच करने के लिए तुम SEL का यूज करते हो and we use net pool. Net pool basically defining the range of public IPs. So range means you are having this 50.5.1.1 50.5.1.1 to 50.5.1.10. So that is your starting range, that is your ending range for public IP. This is what pool contains. Okay. तो pool basically क्या होता है? तुम्हारा range होता है public IP का range. Okay. And that is always you need to purchase. Public IP always is paid. You have to purchase it. So if you are getting 100 private IPs, then you need to purchase 100 public IPs to translate.
and you will have to define the range like this. Okay. तुम्हें रेंज ऐसे स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज तुम्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. So net pool is nothing but the range of public IPs, and SCL we are using it to match the private IPs which we need to translate. तो ट्रांसलेशन करने के लिए ये दोनों चीजें तुम्हारे डायनामिक नेट पे चाहिए, SCL और नेट पोल. Now in terms of static net and dynamic net, one thing is common कि तुम्हें जितने भी तुम्हारे प्राइवेट आईपीस हैं, 10 प्राइवेट आईपीस के लिए तुम्हें 10 पब्लिक आईपीस ही चाहिए. You need 10 public IPs. Okay. तो जितना तुम्हारा प्राइवेट आईपी होगा उतना ही नंबर ऑफ तुम्हारे पब्लिक आईपी तुम्हें चाहिए होंगे. लेकिन अगर रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि मान लो कि 1000 प्राइवेट आईपीस वी हैव, 1000 प्राइवेट आईपीस, तो उस 1000 प्राइवेट आईपीस के लिए मुझे thousands ऑफ पब्लिक आईपीस चाहिए. We need 1000 of public IPs. And these IPs we need to purchase it from the ISP. Okay, now problem comes here when the ISP doesn't give you this many number of public IPs. अगर ISP तुम्हें 1000 public IPs नहीं देता, मान लो कि तुम्हें 500 public IPs चाहिए instead of 1000. So with this 500 public IPs, you can translate 500 private IPs, but the remaining 500 machines will not be able to access internet. तो वो लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते. तो जितना नंबर ऑफ तुम्हारा प्राइवेट आईपीस ट्रांसलेशन के लिए जितने नंबर ऑफ पब्लिक आईपीस की जरूरत है, you are not getting it from ISP. Okay. So in this case, static net and dynamic net doesn't work properly because it doesn't satisfy the requirements. तो उस टाइम पे हम लोग नेट ओवरलोड यूज करते हैं. ओके, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन जिसे कहा जाता है, जिधर पे हम लोगों के जितने भी नंबर ऑफ प्राइवेट आईपीस क्यों ना हो, ऑल प्राइवेट आईपीस, we just need only one public IP to translate it. मतलब एक public IP यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हैं. ओके, तो एक public IP और पहले था 1000 प्राइवेट IPs के लिए 1000 public IP. That is a day and night difference you are having. So one public IP is required in port address translation. That is why it is most popular. Okay. तो जितने भी नंबर ऑफ प्राइवेट आईपीस हो, उन सारे एड्रेसेस को ट्रांसलेशन करने के लिए एक ही पब्लिक आईपी की जरूरत है. So why this one public IP is used here? Because in port address translation, the translation doesn't happen based on IPs, but based on port numbers. Port number जिनका रेंज होता है 1265535. ओके, इसी रेंज में से पोर्ट नंबर को यूज करके नेट ओवरलोड या पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन किया जाता है. ओके, सो पोर्ट नंबर्स ऑलरेडी these are basically logical port numbers. ओके, जैसे कि TCP UDP तुम्हारे पोर्ट नंबर्स हैं, पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 20, 21, 25, 23, 20, 2021, ये सारे तुम्हारे पोर्ट नंबर्स हैं, लॉजिकल पोर्ट नंबर्स which are used for making communications. तो यही सारे तुम्हारे पोर्ट नंबर्स यूज किए जाते हैं बेसिकली इधर पे. ओके, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पे इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी इज रिक्वायर्ड. यू डोंट नीड दैट मेनी नंबर ऑफ पब्लिक आईपीस फॉर योर रिक्वायरमेंट. तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, जैसे कि तुम्हारे राउटर का आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना है. देन यू विल हैव टू कॉन्फ़िगर द आईपी कॉन्फ़िगरेशंस. So that is your gateway 1 router RIP version 2 network 192.168.1.0. Now why we are giving this 101.0? Why not 192.168.100.0? This is also connected to gateway 1. लेकिन हम लोग ये नेटवर्क इधर पर नहीं दे रहे हैं. क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि राउटिंग जो हो रहा है ये बेसिकली इंटरनेट पे हो रहा है. ओके, in our network that is a private address we are using which is not allowed on internet. Okay, तो इसी वजह से ये जो नेटवर्क है इसको टोटली आइसोलेटेड करके रखा है. ओके, LAN 2 3 4 के बीच में राउटिंग चल रही है. सो दैट इज व्हाई गेटवे 1 connected
network on internet, that is 193.168.1.0.1. यही network हम लोग डाल रहे हैं इधर पे no auto summary exit. Then router 1, router read version 2, then network, that is your LAN 3 and LAN 2 and 3. So that is 193, both in public. Then auto summary and exit. And gateway 2, router read version 2, that is LAN 3 and 4, both are in public. Network and auto summary and exit. तो ये जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है ये तुम्हें करने हैं तुम्हारे गेट राउटर्स में. ओके, उसके बाद तुम्हारे स्टैटिक नेट डायनामिक नेट के कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे. So what is static net? That is your manually defining which private IP needs to be translated using which public IP. तो सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारे राउटर पे ये बताने हैं कि तुम्हारा राउटर का कौन सा इंटरफेस बिलोंग्स टू प्राइवेट नेटवर्क एंड कौन सा इंटरफेस बिलोंग्स टू पब्लिक नेटवर्क. दैट इज योर इनसाइड and that is your outside. Okay, so this is the first thing what you do on the router. Okay, और उसी राउटर को यूज करना है जो बेसिकली इनसाइड और आउटसाइड से कनेक्टेड है. So static net, first of all, you are saying interface f0/0 IP net inside exit, interface f0/1 IP net outside. जैसे कि इधर पे दिख रहा है 0/0 private पे है, 0/1 public पे. So that is why inside and outside. Then you are giving this particular command called IP net inside source static 192.168.100.2. That is the private IP. ये तुम्हारा private IP है सारे. तो ये रहे तुम्हारे inside local address, ये private IPs. And this is the address what we are using to translate these private IPs. तो 193.168.101.3 ये जो addresses है बेसिकली मैंने ये LAN number 2 से लिया है, ये range से. Okay, this is the range. ये रेंज बेसिकली ये तुम्हारे फर्स्ट विलेज होस्ट से लास्ट विलेज होस्ट तक का रेंज है. इन्हीं रेंज में से मैंने एक आईपी यूज किया है, दो आईपी बेसिकली 193.168.101.3 and 193.168.101.4. So statically when you are defining your net you have to define it like this. Okay, so right now these two mentions private IP will be translated to this public IPs. तो मैनुअली जब ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस करते हो तो टाइम कंजम्पशन होता है. जितना नंबर ऑफ सिस्टम बढ़ेगा नेटवर्क पे उतना नंबर ऑफ प्राइवेट आईपीस क्रिएट होंगे और पब्लिक आईपीस तुम्हें चाहिए होगा ट्रांसलेशन के लिए, और सारे कॉन्फ़िगरेशंस को ऐसे ही तुम्हें मैनुअली लिख के देना. सो ऑलवेज इट इज टाइम कंज्यूमिंग. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग फॉर डायनामिक नेट. So in dynamic net, the same process, the same step you are doing it, interface, IP net inside, IP net outside, these commands, then you are creating an SCL. Now, why we are creating this SQL? That is to match our private IPs. ये जितने भी private IPs हैं इस network पे सारे private IPs को हम लोग match कर रहे हैं using this SQL. So that is a standard named SQL what we are creating. But IP access is standard net LAN1 SQL. So that is the name of the SQL. You can give any name, whatever you want. Then give permit. Then 192.168.100.0 0.0.0.0.255 and exit. तो परमिट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को मैच करना है. ओके, उन सारे प्राइवेट आईपीस को जो ट्रांसलेशन के द्वारा इंटरनेट पे सेंड किए जाएंगे. So that is why you are basically using this IP access list. Then now the next thing is you have to define a pool. Okay. अभी pool का नाम तुमने दिया है LAN1 net pool. इधर पे कौन सा भी नाम दे सकते हो अपने pool का. और ये रहा तुम्हारा रेंज. Okay, that is the starting range of public IPs. Public IP starting range. And that is what you have the ending range. Of public. Okay. So ये जो स्टार्टिंग रेंज है या फिर एंडिंग रेंज है ये बेसिकली तुम्हारे आईएसपी तुम्हें प्रोवाइड करेगा. जो भी तुम्हारा आईएसपी देता है उसी रेंज को इधर पे लिखता है. So in our case LAN number 2 belongs to this public network. That is why we are taking IP address from this LAN here. Okay.
तो यही रेंज को तुमने इधर पर डिफाइन कर दिया, उसके बाद तुम्हें SCL एंड पूल को अप्लाई कर देना है तुम्हारा नेट पे. So that is our command IPNet inside source list. This list basically pointing to this SCL, this access list. Okay. So the name of the SCL we have, that is net lan1 SCL. इसको लिख देना है. उसके बाद पूल कमांड डाल के ये पूल का नाम तुम्हें लिख देना है. जो भी पूल के अंदर तुमने स्टार्टिंग रेंज, एंडिंग रेंज और पब्लिक आईपी डिफाइन किया हुआ है, उस पूल का नाम इधर पर डालना. Then we need to give this IPNet inside source list command. Net lan1 SCL pool lan1 net2. Okay. Once you have done this configuration, your dynamic net is configured. Okay. अब तीसरा जो होते हैं, तीसरे पे ये जो स्टेप है, okay, up to here, it is basically the same step what we are having. You can see that IP access list standards same हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और बाकी सारे तुम्हारे नेट इनसाइड नेट आउटसाइड सेम प्रोसेस है. लास्ट पे ये कमांड जो है, ये लास्ट का जो कमांड है IPNet inside source list net lan1 SCL, सेम कमांड है. लेकिन लास्ट पे ये इंटरफेस से तुम्हारे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन के कमांड स्टार्ट होते हैं. So that is your interface fs0/1 overload. अभी ओवरलोड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पोर्ट नंबर के बेसिस पे we need to translate private IPs. Okay. और ये इंटरफेस fs0/1 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इंटरफेस fs0/1 पे ऑलरेडी तुम्हारा ISP ने एक प्राइवेट IP दिया हुआ है. Okay. This interface belongs to internet and your ISP has given you this public IP for you to access the public network. So whatever public IP your interface is having, this is what you are going to use to translate all these private machines IPs. Okay. यही एड्रेस पे यूज करके करोगे. So that is your all private IPs is to one public IP. Okay. तो एक ही पब्लिक आईपी तुम्हें चाहिए सारे तुम्हारे प्राइवेट आईपीस को ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि इधर पे ट्रांसलेशन जो हो रहा है ये बेसिकली पोर्ट नंबर्स के बेसिस पे हो रहा है, आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे नहीं. सो दिस 3 टाइप्स ऑफ नेट ऑलवेज इज कॉन्फ़िगर्ड. ओके. लेकिन अगर तुम सारे नेट के कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हो, देन यू कैन सिंपली फाइंड सिमिलरिटी. जैसे कि इधर पे तुम्हारा नेट इनसाइड नेट आउटसाइड इधर भी है, इधर भी है, इधर पे तुम्हारा SCL है, इधर भी तुम्हारा SCL है. सो दैट इज व्हाट यू गेट द सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरिंग. तो सबसे पहले यही करते हैं. ओके. ये स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट या नेट कैसे किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. टेकन? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका लो. Done. डन. नीचे कर लो. Done. ठीक है. So now we are going to be performing the project here. Okay. So first of all, I will delete all the things from this route. Okay. पहले से मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है. इरेज कर देना हूँ सारे कॉन्फ़िगरेशंस. You start कर देना हूँ राउटर. This router also do the same thing. That's it, done. Now I'm going to open my notepad here. और इसमें सारे कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे. So first of gateway one configuration, that is enable config hostname is gateway 1. Then interface we have FS0/0. IP address we have 192.168.100.1.
इधर पे सही है, राइट? ऑलराइट, उसके बाद तुम्हारा नो शटडाउन, then next, then we have interface x0/1, IP address is 193.168.101.1, subnet mask is 6, giving no shutdown and saying X. उसके बाद RIP की कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेंगे एक साथ, वर्जन 2। नेटवर्क हम लोग देंगे सिर्फ 193 वाला 101, then no to 7। अब क्यों सिर्फ 193 दे रहे हैं, 192 भी तो कनेक्टेड है, क्योंकि 192 प्राइवेट आईपी है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे राउटिंग पे। Then we are going to perform the router 1 configuration. So again the same command, enable connectivity, host name is router 1. Then we have our interface type as 0/1, IP address is 193.168.101.1. Then no shutdown and fixing. The interface we have FS0/0 with an IP address of 193.168.102.1. Then no shutdown and singles. Then we are doing RIP configuration. Version is 2 in network. दो network connected है, एक है 101.0, दूसरा है 102.0, and we are saying no of summary and exit. Then we are performing our next router, which is gateway 2. So that is your gateway 2 configuration. Enable quantity, host name is gateway 2. Interface we have FS0/0 with an IP address of 193.168.102.2, subnet mask access, giving no shutdown and saying exit. Then interface FS0/1 with an IP address of 193.168.103.1, subnet mask access, giving no shutdown and exit. And saying router RIP here, version is 2. Network is 193.168.102.0, and network is 193.168.103.0. Then giving no to summary and exit. So that is your overall configurations, what you need to do. Okay, ये सारे configurations कर लेना है पहले, उसके बाद net configure करना है. So I will simply just copy all these things from gateway 1 and paste it here. देख लो अच्छी तरीके से, कोई भी अगर एरर होता है तो उसको करेक्ट करना है. Now going for the second one, router 1, copy, paste, everything is configured correctly. Moving on to the next router, gateway 2, copy and paste. तो ये तुम्हारे सारे बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गए और राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस हो चुके हैं. अब ये सिचुएशन पे अगर मैं ये गेटवे 1 के राउटिंग टेबल को चेक करता हूं, ओके, if I simply just leave the show IP route, you can see that on 193.168.102 and 193.168.103 both are coming. So if I do the ping test from laptop 1, okay, तो laptop 1 का IP देखो, ये रहा प्राइवेट IP, ये सर्वर का IP मैंने चेंज कर दिया है to 193. ओके, सिमिलरली सर्वर का IP भी चेंज हो चुका है to 193, because these are your public servers here, public network servers. So let's do the ping test from this machine to 193.168.173.1. So you should not be able to see any type of reply coming. Request timeout should happen. Okay, request timeout आना चाहिए. Why? Because net is not performed. So when we will perform net, at the time you will see communication.
So that is what our result coming in. So what we do here is we go to this router and we first of all select this interface and we give them inside and outside command. So say interface fs0/0 ipnet inside and interface fs0/1 ipnet outside. Okay. So right now your router knows that which interface is connected to private and which interface is connected to the public. So next thing what we need to do is we need to manually define it. So ipnet inside static, because that is static net. We need to define the private IP address. तो ये रहा तुम्हारा लैपटॉप वन का प्राइवेट IP और इसको ट्रांसलेशन करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 101.3 जो कि लैन नंबर 2 से मैंने IP लिया है. So normal case you are having that is ISP is giving you the public IPs and you need to purchase it and use it for translation. लेकिन इधर पे जैसे कि प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है इसी वजह से लैन 2 से मैंने एक IP ले लिया. So that's it. This is laptop 1 is done. If I want to do translation for PC1 as well, so I will do the same thing like source static and 192.168.103 192.168.100.3. We're going to translate it using 101. तो ये तुम्हारे दोनों मिशंस के प्राइवेट आईपी ट्रांसलेट हो चुके हैं using this address. So when your net router is performing all this translation, it contains a table. It's called net table. And you can always check it using this command. So here exactly is your inside local, that is your private IP, getting translated using public IP. So let's do the ping test now. Okay, ping करके देखते हैं 192.168.103.1. तो ये राउटर बेसिकली अभी क्या करेगा, दैट इज नेट परफॉर्म करेगा और देखो रिप्लाई आ रहा है. वी आर गेटिंग द रिप्लाईज. तो एक बार जाके देखो तुम्हारा नेट टेबल शो आईपी नेट ट्रांसफर. तो ये देखो तुम्हारे मशीन ने लैपटॉप में 4 पैकेट्स भेजे थे इस डेस्टिनेशन पे. इनके जो प्राइवेट आईपी है ये ट्रांसलेशन हो चुका है पब्लिक आईपी से. प्रोटोकॉल दैट इज योर आईसीएमपी बिकॉज तुमने पिंग किया है इस मशीन पर. और ये तुम्हारे होते हैं पोर्ट नंबर्स. ओके, दीस आर द पोर्ट नंबर्स व्हाट यू आर यूजिंग व्हेन यू आर मेकिंग कम्युनिकेशन. तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन जो होता है उस पे ये पोर्ट नंबर्स को यूज करके ट्रांसलेशन किया जाता है. ओके, अभी फिलहाल तो हम लोग आईपी के बेसिस पर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पे यही पोर्ट नंबर को यूज किया जाएगा. तो ये PC0 से अगर हम लोग पिंग करते हैं from this PC you will not see any reply. Why? Because translation is not there. तो request time out आएगा. तो अगर तुम्हें इस मशीन को भी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करवाना है तो फिर डायरेक्टली तुम्हारे राउटर पे जाना है और इधर पे ऐसा करके डिफाइन कर देना है आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक. ये 3 के जगह इधर पे 4 आ जाएगा और ये तुम्हारा पब्लिक आईपी जो भी है. ओके, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो ऑल ऑफ यू. इसका एप्लीकेशंस क्या है? इसका यूसेज होता है कि जब तुम प्राइवेट आईपी यूज करते हो देन तुम्हारा प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट कर देता है पब्लिक आईपी से. ओके, जब भी कम्युनिकेशन करते हो इंटरनेट पे तो फिर तुम्हें पब्लिक आईपी चाहिए होता है और यही पब्लिक आईपी नेट के जरिए तुम ट्रांसलेट करते हो. ओके, तो अगर तुम्हारा मशीन का आईपी ये है तो इसी आईपी को तुम ट्रांसलेट कर रहे हो तुम्हारा पब्लिक आईपी से मैन्युअली डिफाइन करके. तो ये ऐसे ही तुम्हें मैन्युअली डिफाइन करना पड़ेगा. अगर 100 मशीन्स है तो 100 मशीन्स के लिए ऐसे ही कमांड्स लिखने पड़ेंगे और मैन्युअली तुम्हें डिफाइन करके देना पड़ेगा कि कौन सा प्राइवेट आईपी कौन सा पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट होगा. अंडरस्टूड? टेकन द स्क्रीनशॉट.
Yes. टेक ऑन दैट। अभी अगर तुम्हें तुम्हारे नेट ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस को डिलीट करना है, ओके, तो कॉपी कर लो पूरा लाइन, कॉपी एंड गो टू द कॉन्फ़िग मोड, से नो एंड पेस्ट इट। इससे तुम्हारा नेट कॉन्फ़िगरेशंस डिलीट हो जाएगा। कॉपी and paste. Okay, so that is how you delete a static net. Always, whenever you need to delete it, just copy this entire line and just add no and paste it. Okay, तो verify कैसे करें? फिर से पिंग करो 103.2, ये देखो request timeout। So this request timeout simply means that net is not working because we have deleted it. All right. So now what we are going to perform, that is dynamic net. Okay. So in dynamic net, सबसे पहले तो तुम्हें एसीएल क्रिएट करना है। ओके, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और एसीएल का नाम तुम्हें देना है, कौन सा भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने नाम दे दिया नेट हाइफन एसीएल हाइफन लैन 1। ओके, देन यू हैव टू गिव परमिट, क्योंकि तुम्हें मैच करना है प्राइवेट आईपीस को, तुम्हें मैच करके डायनामिकली ट्रांसलेशन करवाने हैं। सो परमिट तुम्हारे प्राइवेट आईपी के नेटवर्क को देना है एंड सबनेट मास्क of /24, that is 0.0.0.255 वाइल्ड कार्ड। उसके बाद ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एसीएल, जो बेसिकली तुम्हारा प्राइवेट आईपी को मैच करेगा। ओके, नेट ट्रांसलेशन के लिए। उसके बाद तुम्हें टूल देना है, आईपी नेट टूल, देन यू आर गिविंग इट a tool name, so net tool for LAN 1। ये मैंने टूल का नाम डिफाइन कर दिया। उसके बाद मुझे डिफाइन करना पड़ेगा 192.168.1.1.3। So that is the starting range of public IPs to 192.168.1.1.5 दे दिया मैंने। Okay, so 3 to 5 you are having 3 public IPs, okay, जिनको यूज करके तुम 3 मशीन्स के प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट कर सकते हो डायनामिकली। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया। उसके बाद मुझे नेट मास्क मतलब सबनेट मास्क, ये जो नेटवर्क मैंने लिया है पब्लिक आईपी की, इसका जो सबनेट मास्क है उसको मुझे डालना है /24। सो दैट इज योर नेट मास्क 2.5 ये तुमने दे दिया तो तुम्हारा फुल कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अप्लाई दिस एसीएल एंड पुल, जो भी एसीएल क्रिएट किए हो या फिर पुल क्रिएट किए हो उसको नेट कॉन्फ़िगरेशन पे अप्लाई करना। So IPNet inside source list। ओके, अब ये लिस्ट कमांड से हम लोग अपना एसीएल को रेफर कर रहे हैं, जो कि नेट एसीएल लैन 1, पेस्ट इट। और उसके बाद पुल कमांड से जो पुल हम लोगों ने बनाए हैं फॉर लैन 1, जिसके अंदर पे सारे तुम्हारे पब्लिक आईपीस के रेंज डिफाइंड है, उसको रेफर करना है। डन प्रेस एंटर। तो ये तुम्हारे क्या हो चुके हैं, तुम्हारा डायनामिक नेट कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। तो कैसे पता चलेगा कि नेट तुम्हारा काम कर रहा है कि नहीं? पिंग करके देखो, ये देखो रिप्लाई आ रहा है। ओके, यू आर गेटिंग द रिप्लाई। इसे भी पिंग करो, पिंग 103.3। So you should get a reply। ये देखो इस मशीन से भी रिप्लाई आ रहे हैं, वी आर रिसीविंग 2 पैकेट्स, और किसी जीरो से भी पिंग करके देखो। सो कॉपी कर देता हूं मैं, पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट। So from this machine also we should get a reply। See that we are getting the reply। Okay. Now let's take the net table of this router।
एग्जिट करो, शो आईपी नेम ट्रांसलेशन। तो ये रहे हैं तुम्हारे डायनामिक नेट। इस पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेरा 3 प्राइवेट एड्रेस जो कि 100.2, 100.3 एंड 100.4 है। ये ट्रांसलेट हो रहा है 101.3, 101.4, 101.5 से। ओके, प्रोटोकॉल मेरा आईसीएमपी है क्योंकि मैंने पिंग किया है इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को 103.2। सो डायनामिकली जो मेरा स्टार्टिंग रेंज है उसी से स्टार्ट हुआ ट्रांसलेशन, और जिधर वो मेरा एंडिंग रेंज है उधर पे ही खत्म हुआ। एंड डायनामिकली ऑलवेज यू नीड दैट मेनी नंबर ऑफ पब्लिक आईपीस। अगर तुम्हारे पास 100 प्राइवेट आईपीस हैं तो उनके लिए तुम्हें रेंज पे 100 पब्लिक आईपीस चाहिए स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तभी ट्रांसलेशन हो पाएगी। ओके, तो मैन्युअली हम लोगों को डिफाइन नहीं करके देना पड़ता कि कौन सा प्राइवेट आईपी कौन सा पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट होगा, क्योंकि ये डायनामिकली हो जाते हैं रेंज से। So take the screenshot of this. That is your dynamic net. Taken? Yes. Everyone taken, right? Yes. Yes, sir. ठीक है। अभी लास्ट वाला जो ट्रांसलेशन है फैक्ट, वो बेसिकली सेम प्रोसेस है। ओके, ये एक्सेस लिस्ट जो बेसिकली हम लोगों ने क्रिएट किया है, इसी एक्सेस लिस्ट को यूज करके करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड टू डिलीट दिस। ओके, तो इसको डिलीट कर देते हैं। डायनामिक नेट है, सो नो एंड पेस्ट। So that's it. This is deleted. Now we will check again. चेक करके देख लो पिंग हो रहा है कि नहीं। So from every single system you should get request timeout. Okay, because dynamic net is deleted, so this machine should not get any replies. This machine से भी कल say that you are getting request timeout, और इस machine से भी कल। So request timeout. So now what we are going to do is performing that. Okay, तो bad translation जो है ये basically same है। Okay, तुम्हें access list चाहिए तुम्हें, और ये command up to here. Okay, so copy and paste it. Then we need the interface. Okay, अब ये राउटर का ये वाला इंटरफेस जो है ये आउटसाइड है। आउटसाइड मीन्स दैट इज योर पब्लिक नेटवर्क। तो आउटसाइड इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस है 101.1 इस नेटवर्क से, उसी एड्रेस को ये सारे मशीन्स यूज करेंगे टू कम्युनिकेट टू ऑल द सर्वर्स ऑन इंटरनेट। ओके, so they are going to be using this 101.1 IP address. तो इसके लिए हम लोग ये इंटरफेस कमांड दे रहे हैं, इंटरफेस f0/1 ओवरलोड। ओवरलोड कमांड से क्या होगा, दैट इज पोर्ट बेस्ड ट्रांसलेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक बार डिफाइन कर दिया, अभी पिंग करके देखो, कॉपी पेस्ट, तीनों से पिंग करेंगे एक साथ, पेस्ट एंड पेस्ट। तो ये तुम्हारे तीनों सिस्टम है, पीसी 0, लैपटॉप 1 एंड पीसी 1। ओके, तो पिंग करो तीनों मशीन्स पे, मशीन से एक साथ, देखो रिप्लाई आ रहा है कि नहीं। सेंड फॉर रिसीव फॉर, सेंड फॉर रिसीव फॉर, सेंड फॉर रिसीव फॉर। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग नेट ट्रांसलेशन देखते हैं, ओके, गेटवे 1 पे शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो ये देखो
100.3, 100.4, 100.2 ये सारे तुम्हारा प्राइवेट आईपीस है। लेकिन अगर ट्रांसलेशन देखते हो इनसाइड ग्लोबल के, तो ये देखो सारे तुम्हारे एक ही आईपी से ट्रांसलेट हो रहा है। मतलब ऑल प्राइवेट आईपीस to translate, you need just only one public IP. Only one public IP is required. Okay. तो ये जो वन पब्लिक आईपी है, ये किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? क्योंकि इंटरनेट पे तुम पब्लिक आईपी के बिना कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते, इसीलिए एक पब्लिक आईपी तुम्हें चाहिए होगा। लेकिन जो ट्रांसलेशन रियली हो रहा है, ओके, इन द नेट राउटर, ये इस पोर्ट नंबर्स के बेसिस पे हो रहा है। ओके, बेस्ड ऑन दिस पोर्ट नंबर्स ओनली यू आर डूइंग द ट्रांसलेशन। तो बेनिफिट हम लोगों को यही मिलता है कि अगर पोर्टलेस ट्रांसलेशन यूज करते हैं तो हम लोगों को उतने नंबर ऑफ पब्लिक आईपीस की जरूरत नहीं है जितना नंबर ऑफ प्राइवेट आईपीस के रिक्वायरमेंट है। दैट इज व्हाट वी गेट द बेनिफिट। अगर स्टैटिक नेट करते हो या डायनामिक नेट करते हो, तो जितने भी तुम्हारे प्राइवेट आईपीस हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए उतने ही नंबर ऑफ पब्लिक आईपीस की जरूरत है। ओके, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। If anyone is asking you about what is the difference between static net and PAT or static net or dynamic net, then these are the things what you need to tell. तो इसके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये बेसिकली सेम कॉन्फ़िगरेशंस ही हैं। पहले से ही एससीएल क्रिएटेड है, तो फिर से मैंने एससीएल क्रिएट नहीं किया, और इधर पे सिर्फ मैंने मॉडिफिकेशन किया, ये लास्ट वाला। ओके, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन्स सेम। So this is your overall configuration for static net, dynamic net, and PAT with how to delete it. Take the screenshot of it. Taken, all of you. Yes, everyone taken the screenshot. Yes. Dynamic net का लो। Taken. Yes, sir. और ये रहा पैट। ये मैंने पूरा कॉन्फ़िगरेशन इधर पे दिया है। ओके, बेसिकली ये लास्ट वाला, ये देखो एसएल इधर पे क्रिएट किया मैंने, और ये लास्ट पे आईपी नेट इनसाइड। ओके, तो जैसे कि मेरे राउटर पे ऑलरेडी एसएल क्रिएटेड है, उसी वजह से मैंने फिर से एसएल क्रिएट नहीं किया, सिर्फ लास्ट के ये कमांड डाला। टेकन द स्क्रीनशॉट। Yes, all of you taken? Yes. Yes. ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा नेट। अभी इसका भी टोपोलॉजी का भी स्क्रीनशॉट ले लो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये पहले ले लिया था राइट? इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया था शायद पहले। Yes, sir. ठीक है, ये सारे ले लिए थे राइट? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो चुके हैं तुम्हारा नेट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द डीएचसीपी। ओके, अब डीएचसीपी है क्या? सो थोड़ा स्पीड हो रहा है, थोड़ा बोलो। लो बताइए सर, थोड़ा स्पीड में हो रहा है। स्लोली बताना है। हाँ सर, थोड़ा फास्ट हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सा जगह पे कंफ्यूजन है बताओ? तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब समझने में टाइम लग रहा है, ये बोल रहा हूँ, थोड़ा धीरे से बताओ। इस टॉपिक में बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स
ये तो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन एक बार कर लेते हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं इजीली। ओके, थियोरेटिकल बेस्ड नहीं है। थियोरेटिकली ये याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हो प्रैक्टिकली बाय डूइंग प्रोजेक्ट तो फिर कर सकते हो। अभी मुझे ये बताओ कि कितनों ने बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस के प्रोजेक्ट किए हो? बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस जैसे कि आईपी कॉन्फ़िगर करना इंटरफेस पे, टोपोलॉजी सेटअप करके, स्टैटिक राउटिंग, कितनों ने किए हो? How many of you have done it? मैंने किया था सर, हम्म, बस मैंने भी करना किया नहीं था। किया था आज। किए हो, राइट? ठीक है। तो जैसे कि प्रोजेक्ट करते जाओगे समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि कौन से चीज के लिए क्या कर रहे हो। ओके, तो जो भी है ये तुम्हारा डीएचसीपी है। ओके, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन क्या कहता है? इसका डेफिनेशन क्या कहता है? डीएचसीपी यूज्ड टू आईपी एड्रेस से सेंड करने के लिए। ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन सर हाँ, तो आईपी एड्रेस किधर पे असाइन करना है? सर्वर पे मशीन्स पे, तुम्हारा मशीन नेटवर्क पे जो मशीन्स है उस पे असाइन करना। ओके, तो नेटवर्क पे हम लोगों के जितने भी मशीन्स हैं उनमें आईपी एड्रेस देना पड़ता है। अब ये आईपी एड्रेस देने तुम अगर देना चाहते हो तो तुम दो मेथड यूज करके दे सकते हो। ओके, यू कैन यूज टू मेथड्स टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस। तो ये रहा तुम्हारा स्टैटिक मेथड। ओके, दैट इज कॉल्ड मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड। So manual method means manually you will type all these IP address, subnet mask, gateway, DNS server, all these informations you need to manually configure it. Okay. और दूसरा मेथड होता है डायनामिक मेथड। डायनामिक, तो डायनामिक मेथड का जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली डीएचसीपी होता है। दैट इज योर डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इस वाले मेथड से सिस्टम को ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाते हैं, तुम्हें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने का जरूरत नहीं। Okay. So manual method, dynamic method, which one is preferred? It totally depends on circumstances. Okay, circumstances के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर मेरा नंबर ऑफ सिस्टम्स जैसे कि 5 पीसेस है इन माय नेटवर्क, then I can use manual method. Okay, लेकिन वही नंबर ऑफ सिस्टम्स अगर 50 हो जाते हैं तो डायनामिक यूज करना। Okay, so when the size of the network is getting bigger, always dynamic is preferred over manual. तो ये बेसिकली तुम्हारी टोपोलॉजी है। ओके, ये टोपोलॉजी है। इधर पे तुम्हें दिख रहा है डीएचसीपी क्लाइंट, डीएचसीपी सर्वर या डीएनएस सर्वर है, और ये एक स्विच है, और ये रहा इंटरनेट नेटवर्क 192.168.1.0। ये इस मशीन का आईपी एड्रेस है, इस आईपी इसको असाइन किया है, और ये दोनों मशीन्स के कोई भी आईपी नहीं है। ओके, तो इस सिचुएशन पे हम लोग डीएचसीपी यूज करके ये सारे मशीन्स को आईपी देंगे डीएचसीपी सर्वर से। अब कैसे ये सारे मशीन्स आईपी लेंगे ऑटोमेटिकली फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर? दैट इज योर डोरा प्रोसेस। ओके, डोरा प्रोसेस इज यूज्ड between DHCP client and DHCP server to assign IP addresses automatically or dynamically in a network. Okay, this is your UDP port number 6768 is used for this entire communication. 67, 68, these are the two ports. One port is used for sending request, another port is used for providing replies. Okay, अभी कोई भी पोर्ट हो सकता है, 67 हो सकता है, 68 हो सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए एक पोर्ट और रिप्लाई को सेंड करने के लिए एक पोर्ट।
और ब्रॉडकास्टेड कम्युनिकेशन होता है। ब्रॉडकास्ट मतलब जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सिस्टम से जाएगा DHCP रिलेटेड वो सारे मशीन्स पे रिसीव होगा। एवरी मशीन विल रिसीव इट। So if you send any DHCP packet from this machine, it will be received by all the machines in your network. That is broadcast. IPv4 का 255.255.255.255 it is used. तो ये प्रोसेस क्या होता है? डोरा प्रोसेस basically discover, offer, request and acknowledgement. These are nothing but DHCP packets only. Okay, this is the packets of DHCP which is used in order to assign IP address dynamically in a network. तो सबसे पहला जो पैकेट होता है डिस्कवर पैकेट, ये क्लाइंट सेंड करता है LAN पे. Okay, the client sends this packet to the LAN and every machine receives it because it is broadcast. तो LAN पे जब सेंड करता है तो तुम्हारा DHCP सर्वर it receives it. Okay, DNS server also receives it, DHCP client also receives it. Okay, other DHCP clients, but they will not give the offer. Offer is always coming from the server. Okay, so the server will be giving the offer. Okay, so in this offer, it will give an offer with an IP address like 192.168.100.4, for example. So when it is giving this IP address to this client, then the client is requesting for that IP address. So ये request send करता है. Okay, तो जो भी IP DHCP सर्वर ने भेजा है as an offer, उसी IP के लिए ये request भेजेगा 100.4. Okay, तो जब ये request मिल जाते हैं DHCP सर्वर पे, then what exactly happens? That is, it gives an acknowledgement. Acknowledgement provide करता है. अब ये जो acknowledgement provide किया जाता है, ये basically ऐसे provide करता है 192.168.100.4 and it will be giving a certain lease. Lease मतलब certain time. कि मान लो कि ये जो IP है ये इस सर्वर ने इस क्लाइंट को दिया है on 2 hours basis lease. मतलब 2 घंटे के लिए ये मशीन इस IP को यूज कर सकता है. Okay, but what happens after 2 hours? That is, the lease gets expired. Okay, मतलब 2 घंटे बाद ये लीज एक्सपायर हो जाएगा. ये जब लीज एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर ये मशीन इस IP को यूज नहीं कर सकता. मतलब 192.168.100.4 जो कि DHCP सर्वर ने इस क्लाइंट को दिया है, ये IP एक्सपायर करने के बाद ये मशीन उसको यूज नहीं कर सकता. Okay, तो लीज बेसिकली हम हमेशा रहता है. जब भी DHCP सर्वर कोई भी IP प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, always it will give that IP on a certain lease basis. और यही तुम्हारे लीज ड्यूरेशन जब एक्सपायर कर जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, DHCP क्लाइंट it basically performs the renewal process. Okay, so that is when they will send a renewal request for this IP address 192.168.100.4. Okay, and the original lease is 2 hours. So this is the renewal request which is coming from client to the server. Now, if the server thinks that this lease can be extended from 2 hours to 4 hours, then it will extend the lease and it will give the acknowledgement. Okay, so now this machine can use this IP address for 4 hours. Okay, so after the extension of the lease, the DHCP server is giving the acknowledgement back. But if the server cannot extend it, okay, if the server cannot extend the lease, then what happens? That is, it will give another new IP address. New IP, that is your 192.168.100.5 with a new lease of 2 hours, for example. So इसका मतलब अभी ये मशीन इसी IP को यूज करेगा 2 घंटे के लिए. Okay, so it is totally dependent on the DHCP server. If the server thinks that
the lease can be extended from 2 hours to 4 hours, then it will extend it. Otherwise, it will simply reject that renewal request and give a new IP address back to the client with a new lease. तो DSCP से जब भी IP प्रोवाइड किए जाते हैं, always that IP is given on a temporary basis. Okay, temporary basis पे IP दिए जाते हैं, मतलब परमानेंट IP नहीं है. Okay, permanently यूज नहीं कर सकते हो कौन सा भी IP एड्रेस by DSCP. Always you will have to use it on a temporary basis. So every single DSCP server maintains a database. Okay, DSCP database को maintain करता है, और ये DSCP database पे तुम्हारे जितने भी क्लाइंट्स को इसने IP दिया है, उन सारे IPs को स्टोर करता है, और ये सारे क्लाइंट के MAC addresses को स्टोर करता है. MAC address. Okay, so whatever MAC address this machine is having, whatever MAC address this machine is having, all those MAC address of these machines are stored in this DSCP database along with IP address. So why exactly it is stored like this? Because it will help DSCP to identify that which machine has got what IP address. Okay, ताकि duplicacy ना हो IP addresses के. Same IP बार बार DSCP से provide ना किया जाए. That is why exactly to prevent this type of duplicacy of IP addresses, DSCP database is maintained. तो DSCP के जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, ये बेसिकली पूल से रिलेटेड होते हैं. DSCP पूल. ओके, इसी पूल पे हम लोग DSCP के सारे कॉन्फ़िगरेशंस को करते हैं. So for example, if we are configuring this server, then this is our command IP DSCP pool, and ये है तुम्हारा pool का नाम. This is the pool name. So you can give whatever name you want, okay, as pool name. For me, I have given LAN pool for DSCP. Okay, this is our network address. From this network, DSCP will provide IP address to the client. So that is the network address you are specifying here. Default router मतलब इन clients का gateway कौन होगा? Okay, gateway. तो ये gateway IP बेसिकली यही IP है, इसी router के IP हैं. तो यही 100.1, that is the default router. Default router means the default gateway. Okay, IP. DNS सर्वर, अगर तुम्हारे पास DNS सर्वर है तुम्हारे लैम्प पे तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो 100.2. If you don't have DNS server, no need to give this DNS server command. उसके बाद exit. So this particular configurations what you have done, that concludes the DSCP pool configurations. Okay. After that, you will have to specify that which address you don't want to give to the client. Okay, from this network. तो इसी नेटवर्क से हम लोग ऑलरेडी दो एड्रेसेस को यूज कर रहे हैं, DNS सर्वर और DSCP सर्वर IP एड्रेस. तो जो जो एड्रेस तुम नहीं देना चाहते हो DSCP पे, ओके, DSCP के जरिए क्लाइंट्स को, you can simply just exclude it. Okay, you can simply just exclude it. So exclude करने के लिए तुम्हारे पास IP DSCP excluded address के कमांड है, और जो जो एड्रेस तुम नहीं देना चाहते हो उसको ऐसे तुम्हें लाइन बाय लाइन लिख लेना है. Okay, so when DSCP will provide any IP address, then it will not give these IPs. ये IP provide नहीं करेगा. Okay, so as long as your DSCP server is working, means it is online, always it will give IP address to this client machines. अगर ये ऑनलाइन नहीं रहता, मान लो कि ये ऑफलाइन हो चुका है, ओके, कुछ प्रॉब्लम आ गया इस पे, इट इज ऑफलाइन, तो फिर ये जो मशीन्स हैं इनको IP नहीं मिलेगा because the server is down. This is when exactly if these machines are using any Windows operating system, any Windows OS, चाहे वो Windows 7 हो या फिर XP हो या फिर 10 हो या फिर 11 हो, कौन सा भी, they are basically having this feature called APPA, automatic private IP address, which
automatically configures this machines an IP address from this range. Okay, 169.254.0.0 to 169.254.255.255. मतलब ये जो रेंज है, ये रेंज को इसी सिचुएशन पे यूज किया जाता है. ओके, जो सिचुएशन पे तुम्हारा सर्वर जो है वो बेसिकली डाउन हो चुका है एंड योर क्लाइंट मशीन्स आर नॉट गेटिंग आईपी फ्रॉम द सर्वर, और सारे क्लाइंट मशीन्स पे तुम्हारे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं. तो एपीपा बेसिकली इट इज सपोर्टेड इन विंडोज ओनली. ओके, माइक्रोसॉफ्ट हैज डेवलप्ड इट specifically in this type of situation where our DHCP server is offline and our client machine needs an IP address to communicate on the LAN. तो इन सारे एड्रेसेस पे यूज करके ये सारे मशीन्स कम्युनिकेट कर सकते हैं. So this addresses are also called as link local address. अभी link local क्या होता है? बेसिकली LAN पे तुम कम्युनिकेट कर सकते हो. ओके, जैसे कि मान लो कि ये एड्रेस है 169.254.0.1. तो अगर इस मशीन को इस एड्रेस मिला हुआ है, ओके, ये एड्रेस अगर कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो इस एड्रेस को यूज करके तुम इस मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. Means whatever machines are in your LAN, you can communicate using this address. But if you are trying to communicate to a different network machine, so let's say that is LAN 2, and you are trying to communicate from this machine to here, then it is not allowed. Okay, ये different network है, तुम्हारा network different है, ये network different है, तो ये जो addresses हैं, it is basically made for communication within LAN. Within LAN only you can communicate. Okay. If you want to communicate from your LAN to another LAN, this is when you need a public IP or a private IP. Okay, you cannot use a link local IP to communicate from your network to a different network because these addresses are always supported for local LAN communication. It's not supported in terms of communicating to a different network. Okay, तो तुम्हारे एक LAN से दूसरे LAN पे अगर तुम्हें communicate करना है तो उसके लिए तुम्हें public या private IP चाहिए. लिंक लोकल एड्रेसेस, ये जो एड्रेसेस हैं, ये बेसिकली विद इन LAN के कम्युनिकेशंस के लिए ही बने हैं. ओके, तो इन सारे एड्रेसेस को यूज करके तुम कम्युनिकेट नहीं कर सकते आउटसाइड योर LAN. तो ये जो सर्वर है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन से ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है. ओके, सारे कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाइड है इसमें, और ये तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें दिखेगा. ये देखो DHCP requesting IP address, DHCP is giving IP address here automatically. This one is getting 100.4, और ये machine DHCP requesting IP address, you are getting 100.3. Okay. So every single IP address when it is given by DHCP to the client, always their MAC addresses are stored in the DHCP's database. तो ये जो machine है, इसका MAC address अगर हम लोग देखते हैं ipconfig/all, this is our physical address which is a MAC address, and this is the IP address which is given by DHCP to the client. Okay, तो ये जो दोनों इन्फॉर्मेशंस हैं, ये दोनों इन्फॉर्मेशंस बेसिकली तुम्हारे DHCP डेटाबेस पे स्टोर रहेंगे. ओके, तो अगर ये देखते हो 755 है, ये 100.3 को दिया है. So go to the DHCP server and use this command called show IP DHCP binding. This is the command to display the DHCP database informations. Show IP DHCP binding. And you can see that this is our MAC address of this 100.3. Okay, this is the MAC address of this 100.4. So all these machines, MAC address and whatever IP address they're giving, okay, the DHCP server is giving, all these informations are stored in this database. You can always check it using show IP DHCP binding. Okay, take the screenshot of it. ठीक है. Yes, sir.
यस सर। ठीक, तो ये स्क्रीनशॉट लो सारे। टेकन राइट? यस सर। ठीक है, अभी ये जो सर्वर है इसको डाउन करके देखता हूँ। ओके, ये जो इंटरफेस FS0/0 है इसको डाउन कर देता हूँ। तो डाउन करने से क्या होगा, DHCP सर्वर ऑफलाइन हो जाएगा। ओके, इंटरफेस FS0/0 शट डाउन। दिस इज द कमांड टू शट डाउन योर पोर्ट। ओके, तो मैंने ये देखो शट डाउन कर दिया है, ये पोर्ट रेड हो चुका है। अभी अगर मैं DHCP क्लाइंट पे रिक्वेस्ट करता हूँ आईपी, तो मुझे एपी पास से इसी रेंज से एक आईपी मिलेगा। ओके, so requesting IP address, it will not get it. You can see that DHCP is failed, API is used. And if you focus here, that is our range 169.254. This is the IP address 150.112, which is given to your machine. So this is getting possible when you are running in your Windows operating system. Similarly, if I go to this machine, over here also you are getting the same result. API will be used. So you can see that 117.90. So if we simply just use this address 117.90 and ping from this machine, 169.254.117.90, you can see that I'm getting the reply. Okay, so we are being able to communicate within our LAN using this address. Okay, even though the DHCP server is not working, but still I'm getting communication. So this is specifically used in this type of situation when your DHCP server is not working properly. Okay, और तुम्हें IP address चाहिए communication के लिए, then API is used to give you the IP address for at least making communications to other machines in the same LAN. तो अगर DHCP सर्वर फिर से ऑनलाइन हो जाते हैं, तो मैं इसको नो शट डाउन कर देता हूँ, तो फिर से ऑनलाइन हो गया। जस्ट वेट फॉर दिस पोर्ट। हाँ बोलो, एक बार रिपीट करते सर। कौन सा चीज? आपने जो सर DHCP सर्वर को शट डाउन करके जो पिन डाले और रिप्लाई मिल रहा था उससे। ये तुम्हारे API एड्रेस से रिप्लाई आ रहा था ना, ये तुम्हारे इसी रेंज से आ रहा है 169.254, ये तुम्हारा API है। ओके, तो जब हम लोगों का DHCP सर्वर डाउन था, तो इस API एड्रेस को हम लोगों ने यूज किया टू मेक कम्युनिकेशंस विद दिस लैपटॉप, दिस DHCP क्लाइंट टू मशीन। ओके, तो DHCP सर्वर नहीं होने से हम लोगों के कम्युनिकेशन पे कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ओके, वी कैन स्टिल कम्युनिकेट यूजिंग दिस एड्रेसेस। ओके, लेकिन ये जो एड्रेस है ये सिर्फ तुम्हारे लोकल लैन पे कम्युनिकेशंस के लिए ही है। इनको यूज करके तुम किसी भी दूसरे नेटवर्क के मशीन को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी कॉल इट लिंक लोकल का मतलब होता है कि विद इन लैन, तुम्हारे लैन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन तुम करना चाहते हो इन एड्रेस के जरिए कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू कम्युनिकेट फ्रॉम योर मशीन टू अ डिफरेंट नेटवर्क, देन इट इज नॉट अलाउड। यही होता है। तो अभी तुम्हारा DHCP सर्वर फिर से अप हो चुका है, तो रिक्वेस्ट करके देख लो IP। See that automatically this IP is coming, और इससे भी इस पे भी IP आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। So that is how exactly DHCP works. Okay, full configuration करना है सबसे पहले, उसके बाद excluded address देना है, फिर डेटाबेस पे जाके चेक करना है कि कौन कौन सा IP कौन कौन से क्लाइंट को दिया है। क्लाइंट के रिक्वेस्ट करने के लिए ये DHCP ऑप्शन को चूज कर देना है। Okay, and you will see the IP address which is coming from the DHCP server. Everyone got it? Understood? Yes, sir. ठीक है, अब
अभी मैं एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ प्रैक्टिकली, इसको करके देखना है। सिस्टम से किसने लॉगिन लिया है? Who has logged in with your system? Raviraj, can you hear me properly? Yes, sir. एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, उसको करना है, ठीक है? ये DHCP वगैरह सब कुछ डाल के, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करके। Okay, sir. तो ये रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट। चार राउटर लेने हैं। ये तुम्हारा राउटर 1, ये दूसरा राउटर है, ये तीसरा राउटर है, ये 14 राउटर है। ओके, इनको कनेक्ट करना है, कौन सा भी पोर्ट यूज करके कनेक्ट करो, ठीक है? इसके साथ तुम एक स्विच को कनेक्ट करना है, स्विच S1, स्विच 1। इसके साथ एक पीसी को कनेक्ट करो, दूसरे पीसी को कनेक्ट करो। फिर ये जो LAN 4 है, ओके, ये राउटर 4 है, इसके साथ भी एक स्विच को कनेक्ट करना है, स्विच 2। और इसके साथ एक लैपटॉप को कनेक्ट करो, सो लैपटॉप 1। और एक सर्वर को कनेक्ट करो, सर्वर 1। नेटवर्क कौन सा भी यूज करो, मैं नेटवर्क नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारा इधर पे टोटल कितना लेंस है? हाउ मेनी लेंस यू हैव? ये जो टोपोलॉजी है, इसमें कितना लेंस है टोटल? 4 कैसे हो गए? 4 लेंस कैसे हो गए? देखो अच्छी तरीके से। हाउ मेनी लेंस वी हैव इन दिस टोपोलॉजी? नो, 3. नो। 2 है सर। कैसे 2 है? टोटल लेंस। टोटल नंबर ऑफ लेंस कितना है इस टोपोलॉजी पे? 7. How many lens we have in this topology? 7, 8, 9. I think 9, sir. 9 lens? 3 लेने हैं ना सर? नहीं, 3 लेंस कैसे हो गया? राउटर 1 to 2 1 लेन हो गया, और 2 to 3 और 3 to 4 4, 5, 6, 7, 9. 3, 4, 5, नहीं, 6. 4 लेंस भी करेक्ट नहीं है। 6 lens. नो, कैसे 6 लेंस हो गए? अच्छी तरीके से देखो टोपोलॉजी को। 1 lens है इधर. How many lens we have? इतना टाइम क्यों लगा? 7. 7 लेंस कैसे? How 7 lens are coming here? सबसे पहले तो ये एक LAN है, दूसरा LAN ये है, तीसरा है ये, चौथा है ये, and that is your 5th LAN. 8. How many LANs we have? 5. 5. हाँ, तो स्विच से जब कनेक्ट करते हो किसी भी कितने नंबर ऑफ मशीन्स को, वो सारे एक नेटवर्क पे आते हैं कि नहीं? है कि नहीं? इधर पे जैसे कि हम लोगों ने टोपोलॉजी बनाया था, राइट? स्विच से कनेक्ट किया था ना सारे मशीन्स को।
सारे तो एक ही लैन पे थे। इधर पे जो सर्वर्स का लैन बनाया थे इधर पे भी तो सेम ही तो है, स्विच से ही तो कनेक्ट किए थे। ये समझो, वही तो सेम टोपोलॉजी तो मैंने दिया है, सिर्फ एक राउटर बढ़ा के दिया है बस। ये तो आ जाना चाहिए था। फिलहाल जो भी है, ये जो टोपोलॉजी है इसको कॉन्फ़िगर करना है। कैसे कॉन्फ़िगर करोगे वही मुझे देखना है। Okay. Raviraj will be sharing the screen and all of you will be joined together to run this project. ये PC1 से ये सर्वर 1 पे कम्युनिकेशन ऑन हो जाना चाहिए। कैसे कम्युनिकेशन करवाने हैं ये तुम्हें करना है। ओके, यू विल हैव टू डू इट। एक बार कम्युनिकेशन हो जाए उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइड करूंगा कि फिर क्या करना है। बट राइट नाउ योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कॉन्फ़िगर दिस एंटायर टोपोलॉजी। कौन सा भी नेटवर्क एड्रेस यूज करो, आईपी एड्रेस इंटरफेस कौन सा भी इंटरफेस यूज करके कनेक्ट करो, लेकिन कम्युनिकेशन किसी वन से ही सर्वर 1 पे होना चाहिए। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड Raviraj, you are sharing screen right now. Yes, Raviraj, can you hear me? Yes, sir. You have taken the screenshot, right? Yes, sir. Okay. अभी वही तो मैं देख रहा हूँ, मैंने प्रोजेक्ट दिया तो बेसिकली दो पार्टिसिपेंट्स दे हैव लेफ्ट द सेशन। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करें? तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा? Whenever you are thinking about learning something, particularly you will have to do the project. तो फिर प्रॉब्लम तो बाद में होगा। Okay. फिलहाल जो भी है, you can basically start, go on, do it. I am stopping my share. Do this project as a team, all of you. Yes, sir. First of all, build the topology. Create new. Remember, you are having 5 lanes, ठीक है? 5 लेन का टोपोलॉजी है। अभी नेटवर्क एड्रेस क्लास सी के यूज कर सकते हो, क्लास बी के यूज कर सकते हो, कौन सा भी यूज करो। सबसे पहले तो दो स्विच लेना है। Raviraj, unmute your mic. Your mic is muted. Can you hear me properly? Yes, sir. ठीक है, अभी करो, एक साथ करो, ये प्रोजेक्ट एक साथ करो, डिस्कशन करके ही करो। ओके, Take out 2 switches. Two 960. Third number switch, bro.
हाँ, और एक ले लो स्विच ए साइड में, और थोड़ा गैप दे दो उसमें, 4 राउटर्स डालना है, 4 राउटर्स, 2 स्विचेस। स्विच 2 ही देना है इसमें। हाँ, 2 स्विच देना है और 4 राउटर्स देना है। डिलीट कर दो बस। हाँ, अबे राउटर्स ले लो 4। हाँ, कॉपर केबल से कनेक्ट कर दो भाई, स्विच टू राउटर। क्रॉस ओवर केबल, अब इसको ऑप्शंस में जाके, रेफरेंस में जाके पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको आईपी असाइन कर दो भाई, 192.168.100.0। दो पीसी ले लो। स्विच 0 पर इधर एक लैपटॉप ले लो, स्विच नंबर 2। सर्वर थर्ड वन सर। नहीं, पीसी में जाके सर्वर लेना है, स्विच नहीं लेना है भाई। ये स्विच रिमूव कर दे भाई, राइट साइड का नीचे का। थर्ड वन क्रॉस ओवर से कनेक्ट।
क्रॉस ओवर ले वो मत ले, केबल चेंज। बॉक्सेस दे दो 5। जब हमारे गप्पू भैया साला मुस्कुराते रहे डेंगू में, रेक्टेंगल ले लो, साथ में कलर चेंज। गप्पू भैया का मुस्कुरा रहे थे। दो लेने भाई, वो दो लेने, एक नीचे सेपरेट करो, ऊपर में। नीचे स्विच के पास से एक लेन लो और दो राउटर के बीच में एक लेन। स्विच के पास से नीचे जो स्विच है ना, फर्स्ट स्विच, उसको एक लेन, हाँ उसको एक लेन ले लो, वहां से ले, हाँ लो, ये हो गया एक लेन, लेन 1। कलर चेंज कर लो। थोड़ा डिफरेंट कलर लो ना, ग्रीन ग्रीन हो जाए, लाइट ग्रीन। क्रॉस से निकाल दो, चेंज कर लो। टर्मिनल टू टर्मिनल ले लो, हाँ चलेगा वैसे भी। नहीं नहीं इतना मत लो भाई, फर्स्ट टर्मिनल 0, FA 0/0, 0/0 to 0/1। हाँ बस। थर्ड कलर लो कोई और, चेंज करो कलर। राउटर 2 से वो हटा दो, ग्रीन कलर का लाइन है, कलर चेंज कर लो, पिंक कलर या रेड कलर को। टर्मिनल टू टर्मिनल लो, हाँ लो। हाँ बस, चेंज कलर, सेलेक्ट रेड, पिंक, स्काई ब्लू, एक रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल लो ना, रेक्टेंगल पे क्लिक करो तो आएगा। हाँ हाँ, कोई इश्यू नहीं है, हाँ ले लो, चलेगा। लेफ्ट साइड में थोड़ा बड़ा लेफ्ट टर्मिनल से लेंगे तो आ जाएगा। हाँ बस, राइट राउटर पूरा ले लो ना। अरे राउटर पूरा भी लेंगे चल जाएगा यार, राउटर राइट का। हाँ बस करो, कैंसिल हो जा रहा है ये। आराम से टच करो। क्या हुआ रविराज? सर सर अभी तो सिर्फ 7 मिनट्स ही बचे हैं, कैसे कंप्लीट कर पाओगे? Okay, just stop your sharing. टाइम रख के करना चाहिए। ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये तुम्हारा टाइम बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस। तुम सडनली के तुम्हारा कंपनी से कहा जा सकता है कि इस DHCP सर्वर को विद इन 5 मिनट्स में कॉन्फ़िगर करना है। ओके, हाउ विल यू डू दैट? तुम्हें अगर कहा जाता है कि इस राउटर पे तुम्हें RIP कॉन्फ़िगरेशन करना है, इस पे तुम्हें स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है, मैक्सिमम 10 मिनट्स के बाद क्विकली तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन दो, तो टाइम ब्रेक रख के तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए। ओके, प्रोजेक्ट अगर बनाने हैं तो फिर एक टाइम रखो कि अगर ये जो टोपोलॉजी है ये पूरा टोपोलॉजी मुझे कितना टाइम पे खत्म करना है इसको। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम मिलेगा ऑर्गेनाइजेशंस पे। ओके, कॉन्फ़िगरेशन जो भी हम लोगों को टास्क मिलता है ये सारे टास्क हम लोगों को कंप्लीट करना पड़ता है विद इन अ सर्टेन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर तुम्हारे ये टोपोलॉजी को तुम्हें 10 मिनट्स पे तुम्हें खत्म करना ही है सब कुछ, हाउ विल यू डू दैट? अगर तुम्हें ये सारे IP एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करना है इन ऑल द मशीन्स,
टाइम है तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट्स का, कैसे करोगे? तो ये बेसिकली कोई रॉकेट साइंस नहीं. ओके, फर्स्ट टाइम व्हेन यू डू इट you will be doing it slowly, but gradually you will have to improve your pace. तुम्हें स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा. ओके, अभी एज ए सिस्टम इंजीनियर ज्वाइन करते हो और एक प्रोजेक्ट करने के लिए अगर 2 घंटा टाइम लेते हो तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी. कंपनी तो बेसिकली इस चीज के लिए तो तुम्हें हायर नहीं कर रहा है. कंपनी हायर कर रहा है कि तुम ये काम कर सकते हो. अगर टाइम बेस्ड तुम्हें कुछ करना है तो तुम उस पर भी आराम से काम करके फिनिश कर सकते हो उस टास्क को. दैट इज व्हाई दे आर हायरिंग यू. ओके, तो ये सारे तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स है ये तुम्हें टाइम पे ही तुम्हें स्टार्ट करना है, टाइम पे ही खत्म करना है. ओके, अभी तो ये तो बहुत स्मॉल लेंस के प्रोजेक्ट है, जस्ट 4 लेंस के प्रोजेक्ट है. अगर मैंने इधर पे 10 लेंस डाल दिया है और तुम्हें कहा कि 15 मिनट्स पे ये 10 लेंस कॉन्फ़िगर करके मुझे दो, देन व्हाट विल हैपन? 15 लेंस, ओके, या फिर 10 लेंस को 15 मिनट्स में तुम्हें कॉन्फ़िगर करके देना. दैट इज व्हाई ऑलवेज यू नीड टू डू योर प्रोजेक्ट्स इन टाइम. ओके, एक टाइम रखो कि इतना टाइम पे मुझे ये लैंप के सारे कॉन्फ़िगरेशंस को खत्म करने हैं, बाकी सारे लेंस के कॉन्फ़िगरेशंस को मुझे इतने टाइम पे खत्म करना है. ओके, दैट इज मैंडेटरी. ओके, विदाउट व्हिच वी कैन नॉट वर्क. ओके, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस को धीरे करने के लिए. तो कंपनीज के नेटवर्क बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं. अगर आईटी एमएनसीज के बारे में बात करते हैं, ओके, these are very big networks where they have like what 30 40 50 number of lines. तो इन बड़े नेटवर्क पे अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें उसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसके लिए तो कैसे करोगे? प्रोजेक्ट्स करके करोगे. और प्रोजेक्ट्स कैसे करोगे? टाइम रख के करोगे. ये प्रोजेक्ट मुझे इस टाइम के अंदर खत्म करना ही है. बाकी सब कुछ भूल जाओ उस टाइम. प्रोजेक्ट within this given amount of time. ऐसे करके प्रैक्टिस करना है और खुद को प्रिपेयर करना है टू वर्क इन आईटी एमएनसीज. अदरवाइज सबको मिल जाते, हर कोई सिस्टम बन के या नेटवर्क इंजीनियर बन जाता, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि ये सारे ऑब्लिगेशंस आते हैं. ओके, ये सारे कथे आती है ऑर्गेनाइजेशन करने के. तो कौन सा भी कंपनी पे जाओ उधर पे तुम्हें बड़े नेटवर्क ही देखने को मिलेंगे, छोटे नेटवर्क नहीं मिलेंगे. और उस बड़े नेटवर्क पे तुम्हें काम करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना सबसे बड़ी जरूरी बात है. ओके, तो मैंने इधर पे सिर्फ 4 लेंस दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ 4 लेंस तो सर आपका वॉइस है सर. right now can you hear me? यस सर. Okay, so project you create okay, whatever lens you want, you create it with that many number of lens. Set your own goal to complete the project within that given amount of time. ऐसे ही करके प्रैक्टिस करते हैं. ओके, ये जो पैकेट ट्रेसर है, ये पैकेट ट्रेसर तो बेसिकली बहुत ही इजीली तुम लोगों को प्रोवाइड करा रहा है. करो. सो कोई भी दिक्कत नहीं है. इन राउटर्स को तुम्हें परचेज भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन तो फुल कॉन्फ़िगरेशंस तुम राउटर्स पे, इन सारे स्विचेस पे, सर्वर्स पे. दैट इज वन बिग फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, बिग एडवांटेज यू आर गेटिंग. जितना बड़ा नेटवर्क है
उतने जितने नंबर ऑफ राउटर्स तुम्हें चाहिए, जितने नंबर ऑफ स्विचेस चाहिए, जितने नंबर ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर्स जो भी ऐड करना चाहते हो ऐड करो, अपना नेटवर्क खुद क्रिएट करो और उसको कॉन्फ़िगर करके practically अपना understand that what is the reason we are using software. Critical सेशन बेसिकली हर एक सेशन पे नए नए कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सेशन पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो फिर वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करता, जिसकी जरूरत सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑर्गेनाइजेशंस पे ही है। तो इसीलिए अपना नेटवर्क खुद क्रिएट करो, ओके, और प्रोजेक्ट करके लाओ, हर एक दिन एक एक प्रोजेक्ट करके लाओ, कोई दिक्कत तो Your voice या is break. वो देखेंगे। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। Your voice is continuously break. It is continuously breaking right now. Hello. Hello. Yes, is it breaking right now? Yeah, little bit breaking. One next. So just hold on. Let me take your screenshots now. All right. So I will see you guys in the next session. Okay. Bye. Take care. Good night, all of you. Good night, sir. Good night, sir.